नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन। जो पहले मैं बता रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ बिफोर आई से नमस्कार अगेन टू सर। ये एक टीजर है। हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई सैटरडे को क्या डिस्कशन होने वाला है हमारा। तो ये थोड़े इंट्रोडक्शन देंगे, आपको थोड़े से थॉट्स के साथ छोड़ेंगे ताकि आप भी अच्छे सवाल पूछें, उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा होमवर्क देंगे आपको सैटरडे को बड़े सेशन के लिए, क्योंकि जो ट्रम्प आया है उससे गहरे राज्य में क्या अंतर आने वाला है। सवाल एक ही है। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। No, yes, इन्हें सारे जितने भी एग्जिट पोल और पोलस्टर्स है सबकी वाट लगा दी. फिर All से said it's going to be a near run thing, except सर, for एग्जिट पोल one, की तो धंधा बंद हो गया है। except for one person who's not an exit poll person. ये अपना मीरशेमर है ना, हाँ, मीरशाइमर, जॉन मेशाइमा। जॉन मीरशाइमर. He said, I don't agree because most of the states, he said, पूरा तो गया नहीं था, about 10-15 states he had visited, and they had told him that people who are going to vote for Republicans are not openly committing to these pollsters. They fear that they will be made fun of because these people control the media. So don't be surprised, he had said, if results come otherwise, and it has come. दो तीन चीज. First person since 1892 to win a second term after a gap. आई नो। ठीक है. Next, first person since George Bush to have won. So I don't agree to that. I'll come to that why. But George Bush का जब कैरी के साथ हुआ था, John Kerry, that time he had won both the electoral college and the अपना public votes. Same here. He has beaten Obama, who had set a record of 69 million. At the moment and still counting, he has crossed 72 million. ठीक है. I'm sure Obama has never liked this. तो मोटे तौर पे बताता हूं, 3 मेजर हेडिंग्स में, आगे डिटेल में सैटरडे को करेंगे. फर्स्ट इज द पॉलिटिकल इंपैक्ट. इंटरनल, भाई साहब, the Democratic National Convention is back to the drawing board. ऐसा कंटाप तमाचा लोगों ने मार के दिया है that they're finding it difficult to swallow. Obama is yet to congratulate him. नहीं, उसने एक स्टेटमेंट दिया है, बट देयर इज नो कांग्रेचुलेशंस. She has congratulated him but made a very dangerous statement that we will fight for democracy. Now that is what you think is democracy, which is not democracy. And when you say fight, means ये आंदोलन जीवी का लैंग्वेज है. एंड बाइडन ने तो हाथ धो दिया है कि दैट शी विल बी द फेस, कि शायद कुछ डील हो गया होगा ट्रम्प के साथ. बिकॉज हंटर बाइडन अगर डील नहीं हुआ ना, ही इज इन द क्लिंक. एंड ही हैज ओपनली सेड स्टेट डिपार्टमेंट, FBI, CIA and the ये Department of Justice all are going to face his heat. And openly कह दिया, स्टेट डिपार्टमेंट ने अंदर घुसाया है लोगों को, जिहादियों को. And look at what happened. He has openly said about the universities where all these Gaza. तो पैलेस्टीन तो आगे बात करेंगे क्या होगा. So the internal turmoil is amazing because even in the blue strongholds, there are many counties where he has won. And the gap which was there, used to be there earlier, between the Republicans and the Democrats and blue stronghold has narrowed quite a bit. ये I think Obama तो blinkers पे लेके पहने हैं. Their people have to give a deep thought, because if they follow down the same path, then the blue strongholds will also collapse.
एक भी स्विंग स्टेट, जितना कुछ दबाव डाला, एक भी स्विंग स्टेट नहीं जीता. So the political turmoil within is going to be a lot, and it would be interesting to see post January 6th what all happens. Political impact, ये तो इंटरनल हो गया. एक्सटर्नल देखते हैं. यूरोप, ईयू एंड नेटो. पहला बंदा तो कोलैप्स हो गया. जर्मनी इज हेडिंग फॉर अर्ली इलेक्शंस. ठीक है. एंड उनका जो बिगेस्ट लेबर यूनियन है, क्या है, व्हाट मेटल, आईजी मेटल, spelled with a double L, gone on strike. So they have collapsed. EU and NATO, बड़ा question mark आ रहा है. Then you come to China. China too will be on his fixed line of fire. All weapons go. So एक ठंडा सा बोला है, हाँ, we'll try to work, but I think China is going to face the blows quite badly. बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, वो बांग्लादेशी हिंदूज वगैरह के ऑलरेडी बोल चुका है. अब वो डर रहा है, नहीं नहीं, वी विल वर्क टुगेदर. देयर इज नथिंग, वी विल वर्क टुगेदर. अभी तो ये सारे जाएंगे. एंड आई एम लुकिंग एट व्हाट हैपेंस टू बाबरा न्यूलैंड एंड डोनाल्ड लू एंड ब्लिंकन एंड गार्लिक चटनी. ठीक है. इंडिया, ऑफ कोर्स, इंडिया के अंदर क्या होगा हलचल, अब आप देख लो. सन्नाटा हो रहा है इन सब लोगों का, हलक से उतर नहीं रहा. So it's going to be really interesting because जहां जहां इनका, आगे बताऊंगा मैं, ये पुराना राउंड टेबल का जहां जहां उन्होंने इंट्रिकेट नेटवर्क बनाया था ना, वो नेटवर्क अभी फटने लगा. देख, इनके जो नेटवर्क बने हैं ना, अभी बता देता हूँ, 10-15% होंगे who would be ideologically with them. रेस्ट 85 to 90% पैसे के लिए है. वहां पे पैसा मिल रहा है तो कर रहे हैं. और पैसा जैसे ही खत्म होने लगेगा, आपने यहाँ पे तो देख ही लिया था किस तरह से गिरगिट जैसे रंग बदले थे लोग, और बदलने लगे हैं लोग, और भी बदलेंगे, सब तरफ बदलेंगे. When you look at the geostrategic level, it is going to have a direct impact on Ukraine war. Zelensky तो गए, जैसे गुजराती में बोलते हैं ना, कमला तू हारिस, तो जेलेंस्की तू हारिस. Zelensky to gone, and we have to see what does he do with Russia. Does he remove the freeze of all the accounts? I think he'll do that, but immediate नहीं करेगा, step by step करेगा. आराम से. He'll get something from Putin ना सर, कुछ लेगा. Yeah. Gaza, Palestine, तो he's already told what all happened in the universities. तो Palestinians तो वैसे ही under the dump हो गए. एंड अभी तो हो गया है. आप और मैं शायद बात किए थे, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ नेतन्याहू कुड हैव डन, एंड लो बिहोल्ड, पता नहीं तेरा मेरा फोन टैप हो रहा है क्या, भाई साहब ने बोल दिया एड विल कम ओनली टू द साउथ. कोई नॉर्थ में एड नहीं है, जो एड आएगा साउथ गाजा में आएगा. फाइनली दे आर स्टार्टिंग टू वर्क प्रॉपर्ली. यस सर. ठीक है. Indo-Pacific region, let's see how he manages Australia. ऑस्ट्रेलिया को दगा दे दिया था बिग टाइम बाइडेन ने. फ्रांस से ले रहे थे, धक्का मार के चाबी लगा के ऑकस किया, एंड देन ही सेज कि नहीं हम तो देंगे नहीं, वी विल प्लेस अ न्यूक्लियर सबमरीन, ऐसे सेट. नाउ व्हाट हैपेंस इन आईपीआर इन ऑकस? इंडिया तो है ही है. The Japanese politics will change now. Yes, sir. Because these people were not very happy with Shigeru coming there because he's a hardliner. So I'm sure they would have done things to make sure that he doesn't have control of diet. Now will come the squeezing of the other political parties to make sure that they acquiesce with him. Some people may join him in the coalition, so that the coalition of SDP becomes stronger.
He lost out in the parliament, ना उनका डाइट बोलते हैं, parliament elections. So वहां पे impact आएगा. And let's see what he does on the eastern seaboard, Indo-China Sea or South China Sea. ठीक है. Most important for India, defense technology. Which way does he go will tell you whether he is serious with India, is the GE engines. That is the major issue. Crux point. Yeah. That hota hai, so then you can say it's hunky dory. Nahi hota hai, so then no. Then it's a case by case thing, and that you're not totally with each other. And now we come to the elephant in the room, deep state. There was a time जब हम elephant in the room तो चाइना बोला करते थे. अब वो बदल गया है, elephant ही बदल गया है. It's from the Asiatic elephant, it has become the European stroke American elephant. Mastiff, as they used to call it then, mastiff. Old round table तो गया. Because अभी इनके पास अब प्रॉब्लम ये हो गया, they have 2-3 disruptors. मोदी जी आ गए, उधर शिगेरो आ गया था, शिंजो आबे को तो आउट करके निकाल भी दिया, तो अभी शिगेरो आ गया, ट्रम्प आ गया, and we does the deal and some give and take with Russia, then Putin will also be the other disruptor for the old round table to handle. It will become difficult. It's becoming difficult now, धीरे धीरे. Will Elon Musk be on the committee, or will he be part of Crown Council now that he's the richest man on the earth? I think he'll be upgraded, sir. Crown Council में जाएगा. मतलब Crown Council में वो गया तो old round table तो जूते मार के निकालेगा. मेटा शेटा सब खत्म. नहीं, मेटा तो स्विच कर गया ना सर. मेटा ने तो हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं नहीं कर रहा ये सब, मेरे को माफ करो. ऐसा नहीं होगा. मेटा तो जाएगा, तुम देखते रहना. क्योंकि ऑलरेडी नाउ अगेन जैसे ही रिजल्ट निकला है, द नेक्स्ट धक्का मेटा को लगा है. साउथ कोरिया इज penalized them, I think some 15 point some $million for leaking data of 100,000 South Koreans, 1 million, close to 1 million South Koreans without taking the permission. तो मेटा के ऊपर पड़ेगा बहुत बुरी तरह से. अभी देखना, फेसबुक, यूट्यूब सब पे जूते पड़ेंगे अभी. They will lose control because currently the control was with the deep state, and like I said, Meta is very clear. He was there for money. So, but then people lose faith, na? Why will the new round table or Elon Musk, when he comes into the committee, why will he trust Meta? Correct. तो ओनरशिप जाएगा. जैसे X का गया था वैसे ही Meta का भी जाएगा, and Google will come under tremendous pressure. Google अभी एक बदलू राम है उनके, ये बिल गेट्स, देखते हैं उसका क्या होता है. पलटू राम बिल गेट्स, उसका क्या होगा. तो अभी ये देखना है कि नए कंटेंडर्स कौन आएंगे राउंड टेबल के अंदर, हमारे तरफ से कौन, स्ट्रैटेजी नया क्या बनाते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि कंटिन्यूटी चाहिए अभी, क्योंकि यहां तो चलो इंडिया के अंदर तो थोड़ा कंटिन्यूटी के लिए तो है. वी नो कि मोदी के नेक्स्ट कौन है कंटेंडर्स अवेलेबल, पीपल आर देयर. बट हु आफ्टर ट्रम्प, उसके ये 4 साल है, कौन? विल इलॉन मस्क बी देयर? किसको लाओगे, किसको प्रिपेयर कर? रेडी. दे आर नॉट दैट प्रूवन पीपल अभी तक. सो देखना पड़ेगा कि कौन है. हाउ डू यू रिप्लेस, ब्रेक आउट दिस ओल्ड वेब जो इतना गहरा घुसा हुआ था, इंट्रिकेट. हाउ डू यू रिप्लेस इट विद अ न्यू वन? इट्स गोइंग टू बी अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. इतना जल्दी तो होगा नहीं. आइडेंटिफाई, रिप्लेस. Essentially, you're not going to break the web. You will restructure the web to yourself. And most important for us,
We are standing for strategic autonomy and voice of global south. So we should consider what would be our limits here. Like I've always said, you have to negotiate. So you have to draw your red lines. So क्या है, कहां तक, किधर, ये मोटे मोटे तौर पे आपके लिए these if this holds true for another 4 years after Trump, you will find a clearer picture of the emerging global order. कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है. Like I said, Ukraine में it's not necessary that you may get a ceasefire. Even an armistice, I believe, will do. जी. So when that happens, it breaks the Russia-China link. It breaks the Russia-China link. Now that Russia is already having better relations with North Korea and North Korean troops having been deployed here, will Trump use him to resolve the North and South Korean imbroglio? How does he resolve the Middle East? Where do the Palestinians finally go? MBS ने तो क्लियर बोल दिया है, one state, East Jerusalem as the capital. Fine. He has been, for the first time, silent on Gaza. So how do you resolve this? What happens? What kind of leverage? He is already squeezed Qatar. So Qatar's head will be on the chopping block now, because he will crush that Qatari unless he delivers on the hostages. वो दबाव आने वाला, and he will ask for Shinwa's brother's head on a platter. Yep. ये दो तीन हैं, खालिद मशाल और ये लोग भी हैं, एक दो और हैं. All these Hezbollah के भी जो कुछ हैं, सब everybody on a platter, and I'm sure they will decorate the Guantanamo Bay. वो खत्म हो रहा था Guantanamo Bay, तो हम न्यू चाहिए ना बंदे to keep it active. ये जाने वाले हैं वहां पे. But how does he relocate and what does he do with the Palestinian? What is this new Palestinian state? Because whatever people may say, you can't laugh at history. There never was a Palestine state. Till the Britishers called it the mandate, Palestine mandate. There was no Palestine state. And that tells you how anti-Semitic the Britishers were. Oh yes. Semitic to anti-Semitic to hai. Because if you look at the history, even under Ottomans, there was never a province called Palestine. There was an autonomous Jerusalem province which was ruled directly by the Sultan. It was not under the Syrian governor. So जो बोल रहे हैं पैलेस्टीन तो पहले बता दो ना, पैलेस्टीन स्टेट था क्या, किधर था, व्हाट वर इट्स बाउंड्रीज. वो तो था ही नहीं कभी जिंदगी में. Even the Arabs don't consider them as Arabs. They said that they were all these gypsies and all whom Ottomans brought them there and settled them here. Because they used to create problems from in all over their empire. जहाँ जहाँ जाते थे चोरी डकैती चपाट करते थे, तो उनको ला के यहाँ डंप कर दिया कि तुम यहाँ रहो. So, but now UN के अंदर भी है. What happens to the UN? Like उनरावा के तो सारे निकल के आ गए, उनके हथियार वो तो वीडियोस भी निकाल के दिखा दिया उन्होंने कि उनके गाड़ी के अंदर बैठ के जा रहे हैं, हथियार में बैठ के जा रहे हैं, डंप कर रहे हैं उनके ऑफिसेस में. So what happens to the UN now? So there is going to be a lot of churning that is going to take place now that he has won with such a mandate. मैंने तो एक को बोला था यार 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, क्लोज रन थिंग बोल रहे हैं. वो साला रात के पहले ही क्लियर हो गया था कि कौन जीत रहा. आई नो, ओबामा ने खुद ने बोला था 4 से 6 दिन लगेंगे एंड ऑल दैट स्टफ. They were all expecting that ना कि it will be a close run thing.
क्लोज रन तो हिस्ट्री हो गया है। मैं ये पूछता हूँ सर, आप एक्चुअली राइटिंग वाज ऑन द वॉल द मोमेंट ही वन पेंसिल्वेनिया। ये सोचते हैं कि सर अगर ये मतलब क्लोज रन होता तो फिर ये उल्टे काम करते हैं अंदर? क्लोज रन तो तब होता अगर प्रॉपर प्राइमरीज करके अपना रिप्रेजेंटेटिव लाते एंड नॉमिनेट करके नहीं लाते। And I'm 100% sure lot of Democrats would have voted against Kamala Chachi because she was not the one elected by the Democratic Convention. She was thoppered by the Obama and their coterie. And then crying, वो victimhood का कार्ड बड़ी अच्छा खेलते हैं, अरे यार उसके पास समय नहीं था। What do you mean समय नहीं था? Hillary Clinton also joined the gang bandwagon and went through the primary. So why couldn't she go through the primary? Who said that she cannot go through? आपको पता है कि अकल की कच्ची है, दिमाग है नहीं उसका। She didn't do interviews, and when she did interviews, she came out like an idiot. Yep. यानी बना बनाया इंटरव्यू, लाइक इनका वो है ना, कौन सा चैनल माइक्रोसॉफ्ट वाला, MNC, MCN और समथिंग ऐसी कोई है, उस पे इंटरव्यू के लिए आई। MSNBC, हाँ हाँ MSN, तो उस पे आई और लेडी को बैठाया उसके साथ। उसने ऐसे ही शुरू करने के पहले, टू मेक हर कंफर्टेबल, इट्स ऑब्वियस दैट शी वुड हैव फेल्ट दैट दिस वुमन इज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल, टेंस्ड अप है। तो स्मॉल चैट लाइव, स्मॉल चैट पूछती है, सो हाउ इज द पोथस? You know what this goonk says? What's wrong with him? He's hale and hearty, perfect, tip top. तो पूछती है, if he's so hale and hearty, why are you sitting here? She didn't know what to answer. मुंह ऐसे खुला खुला करके बैठी है। She would have realized कि मैं क्या बोल गई। हेल्थ बोल के ही तो इसको लेके आए थे जी। वो हेल्थ का पूछती, कहती टिप टॉप है, अटक गई। देन एक और जगह they were talking about क्या relaxation marijuana. She says yes, it's good, it's normal, we should legalize it. I'm always for it. तो the questioner asked, भाई साहब जब तू अपना एडवोकेट एजी थी अपने प्रोविंस में, तूने तो जो रिलैक्सेशन marijuana वालों को तो सबको जेल में डाला था, and you were adamant that this is illegal. So how, what made you change your mind? She had no answer. No answer. And that would have put people ना कि these people are trying to put an idiot की backdoor से try करेंगे run करने के, you know, like अपनी सोनिया गांधी का NAC, पीछे से कठपुतली PM को चलाना कि ये करना वो करना। तो वो कठपुतली को चलाने की, जब इसको भी शुरू में किया था बाइडन को, बट बाइडन ने धीरे धीरे करके उसके जितने भी स्टाफ थे व्हाइट हाउस सबको जूते मार के निकाल दिए। So suddenly they would have felt that कि भाई is not good. I always felt that even if there were 3-4 weeks left, over 2 weeks you could have had a small mini primary यार। जो बचे थे उनके साथ इनको बैठाओ, फेस ऑफ करो, डिबेट करो। बट दे न्यू कि वो डिबेट में तो हार जाएगी, अकल तो कच्ची है इसकी, कुछ आता तो है नहीं। एक आई थी उसमें भी शी लुक लाइक अ फूल एक्चुअली। या तो डिबेट करेंगे तो कोई और आ जाएगा जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एंड लो बिहोल्ड, ऐसा लॉस हुआ है इनको, दे डोंट नो व्हाट टू से। बस Obama only made a statement that this is not the result we were hoping for. How can you hope for a result यार? People are worried that you have brought in so many illegal immigrants, jihadis, and especially जो गाजा का revolt हुआ था in the 43 universities. Obviously यार parents get worried कि ये क्या होगा। Your economy is gone for a toss, inflation has gone through the roof, you're not bothered about it. You're pumping in more and more money into Ukraine without bothering कि भाई तुम्हारे आम जनता तक हालत क्या हो रहा है। Their fuel bills, food bills have all shot up. You have people living on
who normally would have bought their own rations are living on food stamps. Food stamps. Yeah. It's terrible. दौड़ लगता है जब फूड स्टैम्प रखता है, भागते हैं लोग वहां पे, ये फोटो नहीं दिखाते. People rush towards the food stamps to get their food because थोड़ा डिले हो गया तो खत्म हो जाता. So much so that the universities में, can you believe it, foreign students, they have banned the first year students from food stamps. Well, acha, I didn't know this. Yeah. Amazing. Banned. But एक दो हैं जो गधे जैसे व्हाट्सएप में डाल देते, ये किया वो किया, तो उनके पीछे पड़ जाते. बट देर आर पीपल गो देयर एंड आम जनता फूड स्टैम्प्स जो देते हैं वो बेचारों को दे देते हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग थ्रू द रूफ इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. सेनेट तो गया उनके हाथ से. सेनेट भी गया, हाउस भी गया, दोनों गए सर. नहीं, अभी हाउस का पूरा क्लियर हुआ नहीं है. 210 नहीं पूरा सर. ट्रम्प अनाउंस्ड इट हो यस्टरडे. गया. We got the house. नहीं, ट्रम्प has jumped the gun. The trend shows that they'll get it. They have reached, I think, 2008 ki 2010. They need 8 more, 8 or 10 more. 218 चाहिए. Sir. In the Senate तो 52 हो गया, 51 चाहिए. They are already at 52. एक दो सीट्स बचे. इसमें I think 30 odd seats are still left and they need about, I think, 4 or 10, something like that. Last what I saw. वो तो फिर just, that is their biggest worry. If they get all 3, it's over. Chapter is over as far as Democrats are concerned. At least 10 साल तक, 10-15 साल तक. नहीं, वो उनका तो अगले 2 साल के लिए ना. Every 2 years उनका elections होता है. But don't you think the Republicans will capture the House? I mean, going forward, they'll be able to kind of keep the momentum going. That is the whole issue. No, the worry should be that not only have the public given him, the Republicans, the presidency, they have given them the Senate and they have given them are likely to give them the House. That also means the people are, bulk of the people are losing faith with Democrats. And the strategy that they had adopted of this extreme leftism. जी. So, अगर वो एक्सट्रीम लेफ्टिज्म छोड़ के लेफ्ट ऑफ सेंटर तक नहीं आते हैं ना, दे माइट फेस प्रॉब्लम्स वर्ल्ड ओवर. उनके सबके जो चिम्मिच सब तरफ बैठे हैं ना, जैसे दैट गूंग सिटिंग इन मेक्सिको, दैट लेडी प्रेसिडेंट सेज नो, आई विल नॉट कंग्रेचुलेट हिम टिल द ऑफिशियल रिजल्ट्स डोंट कम आउट. यू इडियट, ही इज ऑलरेडी एट 296 सीट्स यार. Official result will only tell whether he has crossed 300 or not. And you needed 270. And what more do you want? Worst part is, अगर ये चीज इंडिया में किसी को बोलो ना, इंडिया में बोलते हैं वो इंडिया can't handle this neighborhood. सालों वो देख लो. वो देख लो. उधर तो जगमीत कह रहा है to decry the election. Yeah. Openly. Because अब जूते पड़ने वाले अच्छी तरह से. और एक अच्छा एप्ट कहावत आ रहा है मेरे को जसविंदर सिंह के लिए, सर मुंडवाते ओले पड़े. खालिस्तानियों के लिए सर मुंडवा लिया, अब ओले पड़ने वाले हैं इससे बहुत बुरी तरह से. And India, I mean, America will not say anything. अभी Trump admin will not say anything if India goes after him now. Yeah. वो नहीं बोलेंगे कुछ. And I'm sure UK में भी हरदम हो रहा होगा. अभी ऑस्ट्रेलिया में भी होगा. यूएस में तो होने ही वाला है, because we have already shared. That's why he said he is going to get after FBI. You had already shared the photographs and everything with the FBI name and everything. They have not yet arrested those Khalistanis who had attacked your consulate in San Francisco. मजा आएगा सर बहुत. अभी पिटने वाले हैं. So interesting times in the Anglosphere, I would say. Very interesting times in the Anglosphere, where the Anglosphere is going to be shivering in their boots कि ये कर क्या दे. If they last time चलो, they may have said that this was a flash in the pan. This time the people of America have spoken that they don't trust the LCM cabal, and they have faith in this man. Yeah.
You may like him or not. That's a नहीं different नहीं, story. मैं इसलिए कह रहा हूं, पिछले बार तो पब्लिक votes had gone to Hillary. Electoral college, this chap had won. Yeah. This time to clean sweep, whether it is the public or it is the electoral college. He's just swept them apart. So, and the manner in which, like I said, the inroads he has made in the blue strongholds, it's all gone. It's crumbling. That means they should be worried that if they go down the path further, 2028 elections, तो blue stronghold तो गिने चुने बचेंगे इनके पास. It will crumble further. मैं वही बोल रहा हूँ सर, ये तो कैप्चर करेंगे. अभी नाउ रिपब्लिकन्स का यही गेम होगा, अपनी नेक्स्ट रंग लीडरशिप लेके आओ और जबरदस्त तरह से ऐसा पकड़ो कि सारा हिले ना उसके बाद. Yeah, and see, all said and done, yeah, you are breaking culture, trying to break cultures everywhere. Correct. Cultures and traditions everywhere, trying to do various things. चौथी जमात के बच्चों को सिखा रहे हो कि भाई call yourself him, his, they, her, पता नहीं क्या. All sorts of nonsensical things in the mind. कि बच्चा बोलता है, I think I am a girl, so I am a girl. I don't know what concept they were looking at, and breaking families. And that is what has hurt, I think, in the long run, in the hinterland and all these places. That is what has damaged the Democrats maximum. You're right, sir. Muslim Americans, Michigan में, they have voted for Trump. Yes. उनको भी तो नजर आ रहा है ना कि Yeah. जिहादियों को लेके आ रहे हो तो हमारी इज्जत तो खत्म हो जाएगी और हमारे बच्चे को वो लेके चला जाएगा तो हम क्या करेंगे. And family traditions. So it's I would say it's an inflection point as far as US and the global politics are concerned. And this churning will now add to what the new global order comes. And I'm sure he is also very clear that without India, Bharat, he can't manage the new global order. तो वो So तो the दिखता ही है interesting सर. time पहले तीन बंदों में सबसे पहले मोदी साहब ही हैं बात करने वाले. And people should not forget the second lady of the US is from Andhra, Usha. And allegedly, by the way, her grand uncle was an RSS member. So Oh, yeah. allegedly. Allegedly नहीं, बहुत. वो तो खुल के बोलती है, वो तो गर्व से बोलती है कि वो तो RSS के थे. And so it's going to be, अब उषा चाची तो हो नहीं, अपना कमला चाची तो हो नहीं सकी, तो उषा ताई आ गई. But it is going to be interesting to see what all is going to happen, how much oil prices are going to fall. I'll give you a reason. He made a statement about oil and that he wants to push for shale oil. And the only way the shale oil will become not competitive is if the OPEC brings the prices down. And the OPEC can bring the prices down only if the Ukraine war stabilizes. Oh, I missed one other major thing. Red Sea खुल गया. हुतीस ने तो जैसे ही अनेक्ट हुआ, हाथ ऊपर करके घुटने टेक दिए कि भाई साहब भैया थैंक यू, माफ करो, मैं नहीं कर रहा. माफ करो, रेड सी तो खुल गया. ठीक है, अब यूक्रेन की लड़ाई को बंद कर देगा तो ओपेक के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे. सो लग रहा है there is going to be a lot of uthal puthal in oil and gas. And but like I said, overnight नहीं होने वाला है. 6 जनवरी को टेक ओवर करेगा तो उसके बाद फिर धीरे 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 he is going to set his team. People are still wondering, is he going to give a position to Elon Musk? वो है ना एफिशिएंसी इंचार्ज बना रहा है उसको, गवर्नमेंट एफिशिएंसी इंचार्ज. गवर्नमेंट एफिशिएंसी बोला तो है, but there is no ministry.
बना There is देगा no सर, क्या departing. प्रॉब्लम है? इतना इतना हैवी मैंडेट से आया है सारा, मिनिस्ट्री बनाने में तो प्रॉब्लम नहीं होगा। या तो अब देखते हैं क्या क्या निकलता है। सो अभी जो भी हम बात करेंगे सैटरडे को वुड बी मोर a guesstimate of what could happen. Things will start unfolding slowly from Feb, I would say Feb onwards. Jan, Feb, so he will take his time to set his team unless he has already decided कौन कहाँ जाएगा. And the first person going to the Middle East, I'm sure, is going to be Jared, his हाँ, son in. जाके इसको खत्म करके आओ, बेवकूफ। जल्दी जा। Kushner जाएगा. Which way, what happens to Iran would be an interesting thing to see. करेक्ट सर। Hmm? इजरायलीज को भी पता चल रहा है भैया ये ज्यादा टाइम नहीं है, जितना कर सकते हो फटाफट खींच दो अभी। वो तो कर भी लगेगा। वो तो सेट कर दिया ना अभी. दैट मीन नॉर्थ एंड सेंट्रल गाजा इज आउट. जो भी एड आएगा साउथ में ही आएगा. आप सब साउथ में जाओ. तो ये सारे अभी गाजन तो एड डिपेंडेंट है. तो दे ऑल हैव टू गो देयर. दैट्स इट. नॉर्थ में कोई नहीं रहेगा. नॉर्थ एंड सेंट्रल आई डोंट थिंक. लाइक वी वर सेइंग ना, नॉर्थ को ही विल टेक ओवर, सेंट्रल को बफर करो. अब किस तरह से वो बनाता है, विल see what he देखते हैं does. सर, But तो दिखेगा। this has no meaning, like we had discussed off the line and you were also mentioning, unless he destroys all the tunnels. Yeah, he has to. North and central tunnels को जब तक destroy नहीं करता उससे कोई फायदा नहीं. Anything else you would like to add? नहीं सर, ये बड़ा, दिस इज अ ब्यूटीफुल टीजर. लेट मी जस्ट से दिस गाइस, मैं ऑडियंस को सबको बोलता हूँ, ये छोटा सा टीजर था, ठीक है? सैटरडे को दोपहर को 3:15 बजे क्लास के लिए आ जाना, क्योंकि ये क्लास होने वाली है मजेदार। ऑन दैट नोट सर, गाइस सब लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सर, आई नो यू आर रनिंग थ्रू अ बिजी टाइम, बट थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम. Thank you, जय हिंद, thank you, जय sir. भारत. Thank you. Jai Bharati.